Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about CCA rules 1965. As we have discussed earlier, CCA stands for classification, control and appeal. So here we will discuss about the applicability and classification mentioned in the rule. So what is the extent of applicability of CCA rules? To whom it is applicable, to whom it is not applicable, and what are the classifications has been given in the CCA rules of central government employee. So that we will discuss. So rule 3 is related to application. Before this, rule 2 was related to interpretation definition. So rule 2 was interpretation definition clause. Rule 1 was short title and date of starting, commencement. So for rule 1 is short title and commencement. Rule 2 is interpretation clause and rule 3 is application. Little bit idea we have to keep in our mind as far as rule number is concerned. Many times examiners quote some rule number and ask the what provisions are given in the rule number, so and so, so and so. So rule number 3, application. These rules shall apply to every government servant, including every civilian government servant in the defense services, but shall not apply to. So this in applicability, what the application has been given in rule 3 is in a negative form. It says this rule shall apply to every government servant, including every civilian government servant. So who is government servant? It has been defined in rule 2, and government servant for this purpose includes civilian government servant in the defense services, that is also mentioned there, but shall not include, but shall not apply to. So this is the exclusion part. That means CCA rules 1965 is applicable to all government servant, including civilian government servant in the defense services. So this is applicable to all government servant. This is the universal applicability. But certain categories has been excluded from CCA rules because they are governed by similarly some other rule. For them some specific provision has been added first. So that is why it is not applicable to any railway servant. It is not applicable to railway servant. It is not applicable to all India services. Here all India services means IAS, IPS, IFS. These three services has been categorized as all India services. So it is not applicable to them. For them separate rule regulation is there. Any person in casual employment, this is applicable to permanent employee only. Temporary casual employee it is not applicable. Any person subject to discharge from service on less than 1 month's notice, 1 महीने से भीतर का ध्यान रखना है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है. एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो 1 महीने से कम के नोटिस पर भी निकाला जा सकता है, ये लोग भी CCA रूल्स के द्वारा गवर्न नहीं होते हैं. एनी पर्सन फॉर होम स्पेशल प्रोविजन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स कवर्ड बाय दीज रूल्स बाय और ऑर्डर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और बाय or under any agreement entered into by or with the previous approval of president. कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, जिसको चाहे, जिस कैटेगरी को चाहे वो इंक्लूड कर दें और जिस कैटेगरी को चाहे एक्सक्लूड कर दें.
और क्या है इसमें, नॉट विद द स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ दिस रूल्स। सो यहाँ पर इंक्लूड का था विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, और यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट हैज पावर टू एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ पर्सन, एनी ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ दिस रूल्स। वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। नंबर 3, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 और द इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्पोरली ट्रांसफर्ड टू ए सर्विस और पोस्ट कमिंग विद इन exceptions A or E in sub rule 1 to whom but for such transfer these rules would apply. So what happens, many persons are suppose some person is working in not working, some person is appointed in railway and on deputation basis permanent absorption for civil services requirement he is transferred to union services for some other purpose for temporary period. So if he is transferred in civil services for that period, it will be applicable to him, and vice versa is there. If any doubt arises whether these rules or any of them apply to any person or whether any person to whom these rules apply belongs a particular service, the matter shall be referred to the president who shall decide the same. In case of any doubt, in case of any confusion whether this department, whether this person, whether this service comes under the preview of CCA rule 1965 or not, that decision will be taken by the president and that decision will be the final decision. Whatever decision taken by the president, that will be the final. If the president says no, this department comes under CCS, it will apply. If president order comes, this order doesn't apply to this department, that department is excluded. So इसमें basically क्या है, CCS rule 3 में all government servant, all civil servants including defense civilian but excluding so exclusion का लिस्ट लंबा है, exclusion के लिस्ट पर MCQ ज़्यादा बनते हैं, इसलिए हमने exclusion के लिस्ट को अलग से फिर से डाला है। पर्सन टू होम नॉट अप्लीकेबल, तो इसमें क्या है, द प्रेसिडेंट डायरेक्ट्स दैट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी होली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द said rules, namely Ministry of External Affairs. So CCA rule is not applicable to Ministry of External Affairs. Locally recruited staff is in mission abroad, not applicable to them. Ministry of Communication, not applicable to Ministry of Communication. So that means rule 3 subclause 2 has been applied by the president, and president has using his power excluded these many agencies from the operation of CCA rules 1965. Post and telegraph services, Ministry of Home Affairs, Ministry of Urban Development, Ministry of Tourism and Civil Aviation, and Ministry of Shipping and Transport. So we have to keep it in our mind that this rule is not applicable to Ministry of External Affairs, locally recruited staff in mission abroad, so it is abroad, that is also external affairs. Then Ministry of Communication, Post and Telegraph, Ministry of Home Affairs, Ministry of Urban Development, Ministry of Tourism and Civil Aviation, and Ministry of Shipping and Transportation. It is not applicable to these agencies. Now let us come to classification. So the civil services of the Union shall be classified as follows: Central Civil Services Group A, Central Civil Services Group B, Central Civil Services Group C, Central Civil Services Group D. For time being, MTS was put in Group D. Now Group D is not
existing. Only group A, group B, group C are existing. Group D is now not existing. So when some typical MCQs are coming, we have to keep in our mind the latest position. So we have to read the question very carefully before answering such MCQs. We will practice some MCQs related to this. If a service consists of more than one grade, different grades of such service may be included in different groups. So this is what about the classification of services. So classification of services में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब है उसको 3 भाग में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. ग्रुप डी आज के डेट में एग्जिस्टिंग नहीं करता है. सो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी 3 ग्रुप में बांटा गया है. इनको ज़्यादा समझने के लिए एज ऑन डेट आपसे टू द पॉइंट कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना है. आजकल क्या हो गया है, पे लेवल हो गया है. ए सेंट्रल सिविल पोस्ट कैरिंग द पे इन द पे मैट्रिक्स एट द लेवल फ्रॉम 1 to 5. ग्रेड पे सिस्टम भी खत्म हो गया है. अब क्या है, पे लेवल है. तो पे लेवल 1 to 5, पे लेवल 1 to 5 दे कम्स इनटू ग्रुप सी. They are categorized at group C. Pay level 1 to 5 is group C. Then 6 to 9. 6 to 9 is group B. 6 to 9 is group B. 10 to 18 is group A. So 10 to 18 pay level is in group A. Now how to learn it? 1 to 5th class primary school. So primary school is in group C. We have to think we are in a primary school, we are studying in 1, 2, 3, 4, 5, 5th classes. So up to 5th classes it is group C. 6 to 9 it is called middle class. Actually middle class is generally 6 to 8. But here we will understand 6 to 9. So 6 to 9 is middle class and it goes to group B. And from 10th to 18 this is matriculation, you can say higher secondary, you can say graduation, post graduation, whatever is there, this all comes under group A. So 1 to 5, 5 fingers, 1 to 5 group C, 6 to 9 group B, and 10 to 18 group A. So this figure should be on the fingertips of the person, those who are going to appear for any examination. So this is all about applicability and classification. आज का नीति श्लोक, अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा, उत्तममानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्. एक अधीनस्थ और गरीब आदमी हमेशा धन की चाह रखता है. एक साधारण मनुष्य धन और सम्मान दोनों की इच्छा रखते हैं, मगर उच्च कोटि के लोग सिर्फ सम्मान की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे सम्मान को ही सच्चा धन समझते हैं. अर्थात मान सम्मान ही सर्वोपरि है. अतः मान सम्मान प्राप्ति हेतु मान सम्मान देना भी हमारा दायित्व होता है. इसलिए जिनको मान सम्मान चाहिए वे दूसरे का मान सम्मान करना सीखें. आप एक बार सामने वाले को रिस्पेक्ट करके देखिए, वो डबल रिस्पेक्ट आपको करेंगे. और अगर आपको रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो जैसे आप बात करते हैं वैसे मिलेगा. तो इसलिए जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी इच्छा है, उसी के अनुसार आप सम्मान करना सीखिए, आपको सम्मान मिलेगा. इसमें एक और चीज़ बताई गई है, जीवन की महान यहाँ पर नीति बताई गई है कि जो लोग पैसा 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 करते रहते हैं, आप ये मान के चलिए कि ये आदमी गरीब है, ये अधीनस्थ है, गरीब है, और इसे हमेशा धन की चाहत होती है. जिसको धन की चाहत है वो मानसिक रूप से तो गरीब है. साधारण क्या होना चाहिए, कॉमन मैन क्या होना चाहिए? कॉमन मैन को मुझे धन भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए. धन तो चाहिए मुझे, क्योंकि
जीविकोपार्जन के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, इस समाज में एग्जिस्टेंस के लिए, सोशल रिकॉग्निशन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, परंतु मान सम्मान के कॉस्ट पर धन हमें नहीं चाहिए। हमें मान सम्मान भी चाहिए और धन भी चाहिए। मगर जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वे सिर्फ सम्मान की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे सम्मान को ही सच्चा धन समझते हैं। अतः मान सम्मान ही सर्वोपरि धन है। मान सम्मान प्राप्ति हेतु मान सम्मान देना भी हमारा ही दायित्व होता है। Those who have not subscribed, please do subscribe, like, share and comment. We'll meet in the next class. Till then, namaskar.